Jai Hind students, this video for class 9th, and today we are going to start a geographical lesson, the lesson number 13. The name of the lesson is India, Location, Geological Structure and Physiography. So in this lesson we will study what is the location of India in the world and how this Indian structure is formed and the physiography of India. So all this topic we will study in this geographical part of our textbook. So let's start from the first, regarding about the culture of our India. The India has got a very unique place in all over the world. The three sides of water body, Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal. This is called the peninsular plateaus, the peninsular position. Dvipkalp, three side water body and one side that is a land. So India gets very unique position and very important position in all over the world. We can connect with all the continent and all the countries because of our unique and very important position in the world. So that's why our Indian culture is also flourished in all over the world also. The Indian democracy is the world largest democracy. भारत की लोकशाही दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है. And we have studied in our politics science lesson in our civics that the India has also the world largest constitution. And in our constitution also we have adopted the secularism, right to freedom of religion, धर्म स्वातंत्रता और हमारे देश का जो सेक्युलरिज्म है, we give the respect to all religion in our country. So that's why our Indian culture is accepted by all over the world with very heartily. सबको हम एक समान नजर से देखते हैं, धर्म की समानता है, जाति धर्म, और इस प्रकार से जो हमारा देश है वो एक बहुत एक मूल्यों से भरा हुआ देश है. एक the Indian culture is a very famous culture in all over the world, and this culture is known as the Indian culture in all over the world. So that's why this is the cultural confluence at the world level. We can say that is a cultural confluence. भारत की संस्कृति का एक प्रभाव है पूरी दुनिया के ऊपर, because we have a unique type of the culture also, give the respect to all the religion, to all the race, caste and to all the sect and all the culture, and different dynasty came over here. We have studied in the also in the history lesson, different people from the Europe and from the other continents came over here and they lost their individual identity and they become as a Indianized, accepted the Indian culture. So the Indian culture is the world based and all the culture, all the people of the different dynasty accepted this culture very heartily. So that's why the Indian culture confluence in all over the world. So it is the one introductions of the lesson. Just now we will study what is the position, what is the location of India in the world. This is the world map and you can see this world map, the different continents, the Asia, Europe, North America, South America, Africa, Australia, Antarctica. This is the world map and India has got the very unique and important position. So if you look the position of the India, first of all, that is if we divide it in the world, so we can divide it into the world at the two level from north and south point of view. There is a 0 degree in the center part of the world, and because of this is the equator at the 0 degree, and because of this equator world has divided into two parts. This part is called the northern hemisphere, उत्तरी गोलार्ध है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के जो साउथ में है दैट इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. सो इस तरीके से नॉर्थ साउथ में दो तरीके से डिवाइडेड है. सो अवर इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यू कैन सी दैट द इंडिया इज इन अवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगर ईस्ट वेस्ट के अगर हम डिवाइड करें फ्रॉम ईस्ट फ्रॉम दैट इज द वेस्ट एंड ईस्ट, देयर इज आल्सो द 0 degree at the central level. So that's why the world also divided into two parts.
this part is known as the eastern hemisphere and this part is known as the western hemisphere. So you can see that the India is in the eastern hemisphere. हमारा जो है वो पूर्व प्रदेश जो है बनाता है, इसलिए आपने हिस्ट्री में देखा होगा भाई एवरी nations came over here and established the East India Company, the British East India Company, French East India Company, Portuguese East India Company. Why the East India? Because the India lies in the eastern side from the Europe. यूरोप के लिए है हमारा ये ईस्ट साइड में है, सो दैट्स व्हाई पूर्वीय प्रदेश है भारत जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है. सो दिस इज द अबाउट द पार्टीशंस ऑफ द एट द वर्ल्ड लेवल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न हेमिस्फीयर, द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. एंड यू ऑल ऑफ यू नो रिगार्डिंग अबाउट द नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. दैट इज द लैटिट्यूड्स, the horizontal line in the globe of the earth, that is called the latitudes. ऊपर से लेकर नीचे तक जो इस तरीके से जो horizontal line है, that is called the latitudes. And the vertical line in the globe of the earth, that is called the longitude. So you have the clear regarding about the latitudes and longitudes, regarding about the northern hemisphere, southern hemisphere, eastern hemisphere and western hemisphere. Now we will study the location of India in the world. हमारा जो भारत का जो लोकेशन है वो दुनिया में किस तरीके से, कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और किस तरीके की कौन सी पोजीशन में है, we will study that. So first of all, India lies from 8 degree 4 to 37 degree 6 द नॉर्दर्न लैटिट्यूड. द नॉर्दर्न लैटिट्यूड अगर आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में अगर देखें तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 to 37 degree 6 the northern latitude. And in the longitudes point of view, the India in the longitude the 68 degree 7 to 97 degree 25, that is the longitude. अगर हम यहां पे देखें तो 68 डिग्री to 97 डिग्री. So this is about the location of our India at the latitude and longitude. 8 to 4, 8 degree 4 to 37 degree 6 northern latitude to 68 degree 7 to 97 degree 25 eastern longitude, the eastern longitude and northern latitude. So this is the location of India at the world level. In the center of the India there is a Tropic of Cancer. You all of you know the Tropic of Cancer is the central level at 23.5 degree, and because of this Tropic of Cancer the India is divided into two parts, the North India and the South India. So this is about the northern latitude, southern latitude and Tropic of Cancer of our country. The north and the south distance is also very important. To north to south from Kashmir to Kanyakumari there is a 2933 kilometer, the distance to Kashmir to Kanyakumari from north to south distance, there is the north to south distance is 3214 kilometer, 3214 kilometer, the north and south distance. And from east to west distance, from west to east, the distance of west to east from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a 2933 kilometer. So there is the north and south distance and east and west distance. So this is regarding about the northern latitude and about the longitude and about the distance. At 82.30 degree there is a standard Indian standard time
IST 82.30 degree. The Indian Standard Time passed from at the 82.30 degree from the 5 states of our country. 5 स्टेट में से ये जो हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक इस तरीके से पास होती है. सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. नाउ व्हाट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? हियर लुक, द इंडिया, दिस साइड इज द ईस्ट साइड and sun rises from the east side. Sun rises from the east side, and this is the west side, and this distance is approximately 3000 kilometer. So that's why the 2 hour difference between Arunachal Pradesh and this Gujarat. अरुणाचल प्रदेश वही हमारा इंडिया का स्टेट है और गुजरात इंडिया का स्टेट है. दोनों के बीच में 2 आवर का डिफरेंस है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे गुजरात के अंदर फॉर एग्जांपल अभी 6 बजे सुबह सनलाइट हो जाती है, एट द मॉर्निंग इन द 6 o'clock द सनलाइट एकदम उजाला हो जाता है, तो यहां पे वो उजाला हो जाएगा 4 बजे, 2 घंटे पहले. यहां पे 6 बजे होता है, तो यहां पे 4 बजे, यहां पे 6 बजे जितनी सनलाइट होती है उतनी ही सनलाइट यहां पे कितने बजे होगी? 4 बजे. मीन्स 2 आवर डिफरेंस, 2 घंटे जो अरुणाचल प्रदेश है वो कैसे रहता है? वो आगे रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे हमारे 7 बजे यहां पे सनसेट हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा 5 बजे. यहां पे 7 बजे अगर अंधेरा हो जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे हो जाएगा? 5 बजे, 2 आवर्स बिफोर, क्योंकि 2 घंटे वो आगे रहता है. सो दैट्स व्हाई द डिफरेंस बिटवीन टू द अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज 2 आवर्स बिकॉज ऑफ very vast the distance, approximately 3000 kilometer. So that's why अभी अगर ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात अलग अलग कंट्री होते तो it can be considered, but this is not the different country, the same country, and in the same country the different time, so it will be a mismanagement at the all the matters in at the all the level. So that's why it is considered that is the Indian Standard Time at the 82.30 degree, also said that 82.5 degree. क्यों ऐसे किया? क्योंकि सनराइज फॉर एग्जांपल यहां से सनराइज होती है, सनराइज होते 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 यहाँ पे इंडिया की इधर सेंटर पार्ट में आ गया, यहाँ पे द सेंटर पार्ट ऑफ आवर कंट्री. तो यहाँ पे कंट्री के सेंटर पार्ट में आया, तो यहाँ पे जब सेंटर पार्ट में आएगा दैट इज कंसिडर्ड 12 नून, दोपहर के 12 बजे कंसिडर किया जाएगा जब सन 82.30 डिग्री के सामने आएगा. सो दैट्स व्हाई इन ऑल ओवर कंट्री द टाइम विल बी कैलकुलेटेड एट द 12 नून. तो पूरे देश में 12 बजे का टाइम है वो सेट होगा. इस तरीके से 2 आवर का डिफरेंस जो है वो का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन लाया गया है फ्रॉम द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. This is the location of our country. The latitudes and the longitudes, the equally is approximately 30. अगर आप काउंट करोगे 8 से लेकर 37 तो बीच में 30 लाइंस आएगी, और अगर आप काउंट करोगे 68 से लेकर 97 तो भी अप्रोक्सीमेटली 30 लाइन होगी. सो the approximately lines of our country of latitudes and longitudes, it's approximately that is the 30 lines in our India. So this is the information regarding about the India's location and India size. ये हमारे भारत का जो लोकेशन है उसकी और भारत की जो साइज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर at the point of 23.5 degree and it passes the 8 states of our country. भारत के 8 स्टेट में से ये पास होता है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम passes through the 5 states of our country. So this is the information regarding about the location and size of our country. In the next video we will study the India's neighboring country and regarding about the India's trade and why the India trade is become easy because of the geographical location. So we will study this point in the next video.
Thank you.